Buckminster Fuller said, "You never change things by fighting the existing reality. To change something, find a new model that makes the existing model obsolete." नमस्कार, मु अनिरुद्ध। वर्तमान वास्तविकता को अणदेखा करी उपेक्षा करी केही केबे प्रकृत रे परिवर्तन आनी पारे नाही। परिवर्तन आनिमा को हेले आमको एक नुआ उपाय, नुआ मॉडल, नुआ सिस्टम बाहर करिया को पड़िबो, जहाँ वर्तमान स्थिति, वर्तमान सिस्टम, वर्तमान मॉडल को पुराणा कालिया बा दरकारी बोली प्रतिपादित करि परिबो। आ सेति पई साधन एवं साधना उभय जरूरी। तेबे आमे कोन वैज्ञानिक, आमे मॉडल फॉडल कथा कहीं आलोचना करुचे ना, आमे वैज्ञानिक नुहे, किंतु आमे एथर मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस रे एमिति एक विश्वविद्यालय उपर फोकस करिबा जो माने वैषयिक ज्ञान कौशल को, टेक्नोलोजी को प्राधान्य देइचंती, नुआ नुआ कोर्स से माने आरंभ करिचंती एवं सेतिरे तांकर छात्र छात्री माने उपकृत होइचंती एवं से माने विभिन्न क्षेत्र रे प्रतिष्ठा अर्जन करि पारिचंती। तेबे विश्वविद्यालय ना कोन? विश्वविद्यालय ना होची बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर असाइनमेंट बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी ता केउंठी प्रतिष्ठा होइची, सेठी कौन कौन पाठ पढ़ा होची एवं को माने सेठी अछंती, दायित्व अछंती एवं को माने पाठ पढ़ौचंती एवं पिला माने सेठी किभଳି भाबरे शिक्षा अर्जन करूचंती ता ऊपर नजर पकेबा। जुगे जुगे उत्तम समाज गठन रे शिक्षार अवदान महत्वपूर्ण। तेबे समयोपयोगी शिक्षा एवं तार सदुपयोग ही आमको साहस एवं सफलतार सह जीवन को सामना करने को शक्ति और प्रेरणा जोगाई थाए। एकविंश शताब्दीर आवश्यकता को विचार करी 2015 रे आरंभ हैला बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी बा बीजीयू। भुवनेश्वर उपकंठ गोठपाटण रे प्राय 30 एकर जमी रे प्रतिष्ठा होईची बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यह एक सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यार आरंभ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बा बीमटेक भुवनेश्वर रु होइतिला। बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा एक्ट 2015 अनुଯାयी 2016-17 रे यह पाइला विश्वविद्यालय मान्यता। स्वर्गत बसंत कुमार बिरला एवं सरला देवी बीजीयूर प्रतिष्ठाता। बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर अध्यक्षा श्रीमती जयश्री मोहता बीजीयूर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुख्य। बीजीयू रे अछि बिरला स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बिरला स्कूल ऑफ कॉमर्स, बिरला स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, बिरला स्कूल ऑफ लॉ एवं बिरला स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। एई घरोई विश्वविद्यालय रे विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल एवं सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध। छात्र मानक नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करने को बीजीयू रे कार्य करुछि सेंटर फॉर कॉर्पोरेट रिलेशंस। छात्र छात्री सर्वांगीन विकास को गुरुत्व देइथाय बीजीयू। विश्वविद्यालय प्रतिटी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे छात्र छात्री को अधिक सामिल करने को मैनेजमेंट पक्षर उद्यम होता है। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न अभिज्ञ शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर पीपी माथुर बीजीयूर कुलपति दायित्व निर्वाह करुछंती। यह आदर्श विश्वविद्यालय सफलता पई यार टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर सह कांध को कांध मिलाई उद्यम जारी रखिछंती यार अनुभवी रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर बीके दास। यह अत्याधुनिक विश्वस्तरीय घरोई विश्वविद्यालय मैनेजमेंट कहवा अनुसार नूतन पीढ़ी प्रोफेशनल यह सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण लक्ष्यस्थल। यह विश्वविद्यालय सम्मान, आदर्श एवं परंपरा बजाय रखा बीजीयूर प्रतिटी सदस्य सर्वदा 100% उद्यम करिथांती बोली यार मैनेजमेंट पक्षरु कहा जायछि। Well, I basically come from Patna, so I have my bachelor's degree in mass communication itself. So I was looking for a place where I could find practical knowledge at the same time, and have my classroom experience as well. So now that I am facing so many interviews, I'm glad to tell you that I have been facing interviews, placement interviews, and I've been appearing for big companies like Genesis BCW, and I'm very happy because I would have never thought that I would get an opportunity like this to come in my way to appear for such big companies, and I'm really thankful to BGU. It is a very good experience being here. Here at BGU, we have a mentorship program where each student is allotted a faculty member who guides him or her not just for academics but also for other personal issues that the student might face here on campus. बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी विषय रे
आमर किछटा आइडिया होगला से वैषयिक ज्ञानकौशलर सदुपयोग कर शिक्षादान क्षेत्र में से बढ़िया भाव में यूज कर सफलता पाँच पिला द्वारा उपकृत होती तेरे टेक्नोलोजी कौन वैषयिक ज्ञानकौशल कौन हिस्टोरियन क्रिस्टियन लुस लुंगे हिसाब रे टेक्नोलोजी इज ए गुड सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर आपण टेक्नोलोजी को सफल भाव विनियोग करूँ किंतु टेक्नोलोजी को आपण को रूल करने सुजोग दिंतु ना नहले विपद घनइब एक ठीक कि भूल आप चिंता करूँ John Dewey said, education is a social process. Education is growth. Education is not preparation for life. Education is life itself. आम जीवन रे शिक्षार महत्व अधिक गुरुत्व अधिक जार शिक्षा जेते अधिक तार जीवन रे प्रतिटी कार्य रे ताहा प्रतिपादित होता है एक कथा आपण मानतु बा न मानतु इट्स टाइम समय वर्तमान टू मीट द लीडर द एजुकेशनिस्ट the mentor, the philosopher, the guide, in fact, the magician, with his dint of experience, exposure, and expertise, has created several hardcore professionals. Presently, he is in the Birla Global University in charge of Vice Chancellor. He is the Vice Chancellor BGU, Kulapati. तांकोट जानिबा प्रकृत रे तांकर जो अगाध ज्ञान अछि तांकर जो वर्ष वर्ष जो अभिज्ञता अछि तांकोट सुनिबा प्रकृत रे केमिति से वर्ष वर्ष धरि एते हार्डकोर प्रोफेशनल तयारी करि परजंदी आ बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी रे से कोन कमाल कर देखि छै वेलकम टू द शो सर प्रोफेसर माथुर as you know it's a self financed university started in 2015 it was presumed to be and defined to be the best destination for professionals. But since inception till today, what are the milestones BGU has achieved? I think BGU, as you rightly pointed out, has started just 4 years ago. And I think a lot of things have happened in this university. First of all, if you look at the ambience of the university, the ambience is one of the best which one can provide in the city like Bhubaneswar. The second thing which we have that the teachers, the faculty who are there in our system have been trained very well, and most of them are PhDs from different universities. So their mentorship and guidance to the students is extremely important, and the students feel much comfortable when they are guided by the teachers, those who are qualified and they have been working in different other good institutions as well. And even now we are changing the syllabus, we are adding new courses, new papers, as we are starting some of the courses like business analytics. We are adding some courses like banking technology and so on and so forth. So I think that though it's a small institution, but the institution is determined to create an ambience for the students, those who will want to learn things in a very systematic manner and know about the latest. Professor Mathur, you would agree that for any educational shrine, infrastructure as well as the faculty members and their synchronization is more important. Yes. How well and how professional trained are your faculty members, and how will they impart that knowledge, they transform that knowledge to the students? As I just mentioned you, that our faculty members are trained from best of the institutions within the country, and they have been training the students in a best possible manner, and we are trying to recruit the leaders of different level in our institution. I think that within the next year you would see the capacities of the institution almost doubled, and we would see that the students would get much more advantage out of the faculty members than they are getting today. You have undergraduate and postgraduate, doctoral and certificate courses. Yeah. You said your School of Management is doing wonders. But what are the courses where you want people to come in more and do well, and that target has not yet been met? Yes, you are right. I think there would have been certain difficulty in making connect with the society. I want that all the courses are to be connected to the society, where the students will feel attracted to go and take these courses. I am very sure that the students this year
would definitely increase for the commerce courses, the courses of communication and mass media, and also economics we have, and law. For any professional varsity, placement is important. Yeah. Which are the major organizations which hire your people, or they come to your campus and take your people with a smile in their face? Yeah, actually most of the companies, those who offer to the management, mainly they come, and basically they are the various companies, those who are the service industries, the industries which are outsourcing industries, the companies, those who are, basically we are not able to rope in too many technical companies because we are not in the technical business, but very soon when we have technical courses with us, I think the companies like what people used to talk about, Google or Yahoo or Flipkart and all that, but they will also come. But I think that many of the companies, those who have come, they have placed the students very well, and even fintech companies, they have taken the people. I don't have exactly the names of the companies, but you the have financial. Center for corporate relations also to interact with the national and international. They basically interact with the companies. They help the students to see that the goals of their are matched with the companies, and finally the recruitment process which takes place, that is facilitated, and the students get all the support from the institution. So that is the kind of interface between the university system as well as the industry. And the students, those who have gone outside, they have very good jobs. Personally, as a student, you have a wonderful career. You were with Pondicherry University for long. You contributed to Indian education system a lot. Over the years, your journey, how do you define it? Are you satisfied or more to do, miles to go? I think this question is a very interesting question. In fact, you are telling that I still feel that I was not successful enough. But I tried my level best to achieve whatever it is possible. Even in Pondicherry University, though it is a central university, it has been central university, there were great challenges of the place, of the time when we started that university, and the visibility of the institution was very difficult to find, but I think we have done it. You have a lot of contributions to biochemistry and molecular biology. You are an expert in that. With the corona pandemic scaring the world, and now the rush for vaccines, and there is another strain scaring the world as well. Your take on that? I think this is the nature, whatever takes we do to the nature tries to reclaim it back. So I think this is a reclamation process of nature which is going on. But having said that, the life sciences now people would have seen, because before that people used to ask me, what is the scope of life sciences? I think now everybody has understood the scope of life sciences, the scope of biochemistry or molecular biology. I think last year in the newspaper, more than 50% of the articles, they belong to virus, vaccines, drugs, and the related things. In July 2020, the Union government introduced the new education policy. Yeah. That means the 1986 old model would be obsolete. But your take on the new education policy? I think this is extremely student-friendly policy, whatever it has come up. The only challenge will be with the institutions to implement it, because we are already on the way to start the inception, because we are a young university, and secondly we are a smaller university, but in bigger university challenges will be big, and the older university also challenges will be different kind. First of all, the student friendliness in this policy is this, that they are advocating for any time exit or entry. Now that global warming is threatening the world, and there is a lot of talk already. Already Corona has shown us the trailer, and experts believe that many more threats are on the pipeline. So in that case, how do we save Mother Earth? Actually, what we have to see that we do not consume, we don't over exploit nature, which we are doing currently for the benefit of ours. Imagine that if this thing continues to happen, it is not too far
that we will be left with nothing, and our survival depends on the survival of other species, which we think that those species are dangerous to us or we should not. Every species keeps us survive. So I think it is our responsibility to see that the species is not disappearing from the face of the earth, and they cannot be retrieved any time. That is the worst thing. So I think that more and more awareness among children, of course it is coming, but I think in the circles where they make policies, it should be percolating so that we don't Thank you, Professor Dr. P.P. Mathur. Talking to you is a great privilege, and we don't know how much of your expertise and experience we grasped and how much the audience are going to be benefited, but it's a privilege, lifetime privilege, in fact, talking to you and sharing your knowledge. We know, we all have heard that the sky is not the limit. The mind that sees the sky is the limit. आकाशर परिसीमा केते ताहा आम जानूना, किंतु आम जहाँ देखू आमको जहाँ देखा जाए ताहा ही आकाशर सीमा बोली आम आकलन कर। एकता ही बड़ कौन सी बड़ सफलता पाइबा को हेले टीम वर्क बहुत इंपोर्टेंट। से जॉन सी मैक्सवेल सेड द ट्रूथ इज दैट टीम वर्क इज एट द हार्ट ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। आसतु बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी आउ किसी सदस्यों सह कथा हेबा। आम सहित अछंती बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडवाइजर एंड रजिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर बीके दास। डॉक्टर दास आपण राजनीति विज्ञान रे पीएचडी करिसेंती, बिजनेस पाठ मध्य पढ़ी, बिजनेस मैनेजमेंट करिसेंती, एलएलबी पढ़ी। आज प्रकृत में से सब पाठ आपणकर बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी भली गोटे सेल्फ फाइनान्स यूनिवर्सिटी उन्नति करिवारे केते सहाय्य करूछि? देखो पाठ हूँ पाठ जो थे आप जो फिल्ड रे भी जीवे पाठर मूल्य रही। तेणु जेहेतु एक्सपोजर होती पाठरे मो जानी जे गोटे विश्वविद्यालय फंक्शन कौन 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 दरकार सी तापरे आपंकर गोटे सोसाइटी रे भी मान्यता रही। जी क्वालिफाइड लोक तार एपर्यंत आम भारतवर्ष रे तार सम्मान रही। तेणु बहुत साहाय्य कर जो कोर्स बर्तमान सब इंट्रोड्यूस होती पिला रिक्रुटमेंट रे केते हेल्प करुच्ची आ जो पिला माने अनएम्प्लॉयड रही जाउछन्ती बा रिक्रुटमेंट तांको कोनोसी कंपनी नौ नाहंती बा माने पाउ नाहंती तांको पई आपनकर उपदेश कोन रहिबो? विश्वविद्यालय हो कि विद्यालय हो एटा गोटे फैक्ट्री नुहे एम्प्लॉयमेंट दवाको एठी छात्र माननकु छात्री माननकु प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट करने को तांकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने को सो दैट से माने जाइए फील्ड रे कम्पीट करि परिबे अन्य मानक संगे चाकरी पाइबाकू। बिजू भली गोटे यूनिवर्सिटी जोटी प्रायतः सेल्फ फाइनान्स कोर्स सब अच्छी आर्थिक भाव स्वच्छल नथिबा पिलांग पई आपण मानकर से भली कोनोसी प्रोत्साहन अच्छी कि जे से माने मध्य पढ़ी पारिबे ना नहीं? आमर जो स्टूडेंट मानक पई जो कहले लो इनकम ग्रुप रो से प्रोविजन रही स्कॉलरशिप रो प्रोविजन रही दी प्रकार अच्छी स्कॉलरशिप गोटे हूँ मेरिट स्कॉलरशिप आ गोटे हूँ जो मानकर मेरिट सहित किसी दारिद्र्य सीमा रेखा तौक अच्छा से भी स्पेशल स्कॉलरशिप अच्छी किंतु मुझे एडमिट करी एत संख्यार ना जिते पिला आसुँच समस्त ना जी आम दे पार्चु से दौचु विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप रे डिस्ट्रिक्ट करी दौ। अच्छा आप बिजू कैंपस रे नुआ कौन करने आप चाहती यू आर द रजिस्टर आप कौन आउ नुआ करने को चाहूँ कहीं आमर यहाँ तो गोटे वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बर्तमान आमर जी गोटे यूनिवर्सिटी रहा कथा भेराइटी ऑफ कोर्सेस सेटा आमर एपर्यंत है ना माइल्स टू गो। हाँ माइल्स टू गो एंड आम बर्तमान यही वर्ष आरंभ करूँ केटा स्पेशल कोर्स जोटा कि आपको कहूँ चाहूँगी आम गोटे बैंकिंग टेक्नोलोजी उपरे गोटे करने चाहूँ जोटा कि बर्तमान आप जानते बैंक हैज बिकम टोटली डिजिटल तेणु किंतु से अनुसार वर्कफोर्स आम देश में नहांती कहीं आम ट्रेडिशनल बैंकिंग चलता बर्तमान जी जो डिजिटल बैंकिंग में आम बैंकिंग टेक्नोलोजी जो थे कि केमती एटीएम काम करुँची फंड ट्रांसफर होची केमती इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होची सब से माने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाई एमबीए डिग्री पाइबे। थैंक यू डॉक्टर दास आम आशा करूँ बिजू नहीं आपंकर जो योजना अच्छी ताहा सफल भाव कार्यकारी हो पिला आहरी अधिक उपकृत हो। यही बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी आम जो कोर्स करूँ बीकॉम रे एमकॉम कोर्स करूँ
এটা কেবল স্কিল ওরিएंटेड रखिछु नॉलेज भी रखिछु स्किल कंपोनेंट बहुत रखिछु आउ एठी गोटे नुआ जिनिस करछु जेहेतु ऑटोनॉमी अच्छी तेणु आम प्रति वर्ष मार्केट रे जहाँ चेंज है आम से चेंजटा करुचु आम प्राय 9 जन विभिन्न बैंक जो जनरल मैनेजर बा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक को डाकिछु से माने कंसेंट देइचंती अप्रैल 17 रे 3टा सेशन रे आम आमर टार्गेट ग्रुप हूँ एकेडमिशियन बैंकर्स रिसर्चर्स आउ जो माने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स धर कॉमर्स मैनेजमेंट आईटी इंजीनियरिंग जो मानकर भविष्य रे बैंकिंग लाइन में जावाक इच्छा अच्छी बा कंसल्टेंसी करने को इच्छा अच्छी इवन आईटी रे फाइनेंस डोमेन रे भी पिला जाउछंदी आमे सेटा गोटे टिके लार्ज स्केल रे करूछु आ वर्तमान जे हमर रेस्पॉन्स बहुत भल अच्छी आमे भावछु एटा गोटे स्टार्ट हैला बैंकर्स कॉन्क्लेव 2021 प्रति वर्ष हम प्रति वर्ष विभिन्न बैंक मान को लेकिन आम गोटे लिंकेज डेभलप करवा बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी संगे बैंक मान गोटे लिंकेज डेभलप करवा ये गोटे विन विन सिचुएशन दुई जन को हम बिरलाज आर नोन फॉर एथिक्स एंड सोशल सर्विसेस तेणु आम पाखे गोटे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस निहाती रहा दरकार थिला तेणु आम पाखे अच्छी आम से पीएचडी प्रोग्राम इकोनॉमिक्स दौचु एमए इन इकोनॉमिक्स दौचु बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स दौचु तेणु सेटा चली Our students are spread over. We have students from Nepal, from Kerala, from different areas, different states, Rajasthan, UP, West Bengal, and all of them are enthusiastic. They want to participate in activities, and also online. Even during COVID, we had a number of activities like moot courts, virtual moot court competitions, and other activities, judgment writing and others. आमे बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपसटा हूँ गोटे स्टूडेंट ड्रिवेन कैंपस एंड आम सब थे इन्वॉल्व करूँ स्टूडेंट्स को सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे आर सैटिस्फाइड विथ द फैसिलिटीज एजुकेशन प्लेसमेंट ऑल दीज थिंग्स आज आम बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी विषय जानले से जो मैंने फैकल्टी अच्छा टीम लीडर्स जो नेतृत्व नौकरी से कथा हेले गोटे कथा स्पष्ट से माने सफलता पाई किंतु से संघर्ष करुचंती उद्यम करुथिले एवं करुचंती एवं आगो को करिवे मध्य कारण शेष जाए आमको उद्यम करने को पड़ो हिंदी गोटे बढ़िया कथा कही कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए मंजिल मिले या तजुर्बा चीज दोनों नायाब है आमे चेष्टा करिबा शेष निश्वास जाए चेष्टा करिबा सफलता मिलू बा अनुभूति उभय आम दरकारी आपण कथा चिंता करूँ ठीक कि भूल एवं आपण जीवन संघर्ष को आपण किभली अधिक त्वरान्वित करेंगे केते सफलता पाइबे केते शक्तिर सह लड़िबे ताकू डिसाइड करूँ किंतु गोटे कथा भूलिबेनी मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम रो प्रतिटी उद्यम सह जोड़ी हेबाकू एथरक किंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।